Hi everyone, this is Chandni Singh and welcome to my channel. और आज मैं आपको दिखाऊंगी that how I mix my airbrush and manual makeup techniques together. As always, I start with the eyebrows. Of course, मैंने skin prep भी किया है. Today I'm going to do very soft pretty pink eyes and इसीलिए मैं उसका base create कर रही हूँ एक lip pencil से. हेलो आइज़ में आपको काफ़ी बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है क्योंकि द एजेस हैव टू बी perfectly blended. Today I'm also going to do a brown eyeliner because I want to keep it very soft and pretty, and I'm using the K Beauty brown eyeliner and I absolutely love it. It's liquid. एयरब्रश मेकअप करने से पहले मैं मैनुअल स्किन प्राइमिंग टेक्निक्स यूज़ कर रही हूँ एंड येस आई डू कंसील द प्रॉब्लम एरियाज एंड देन आई एयरब्रश द स्किन परफेक्टली. जब भी आप मैनुअल एंड एयरब्रश मेकअप टेक्निक्स इकट्ठे यूज़ करते हैं, जस्ट मेक श्योर दैट योर बेस इज़ एब्सोल्युटली सेट इन प्लेस परफेक्टली. तब तक कुछ भी ऊपर नहीं करना है जब तक वो 100% ड्राई नहीं होता. To be very honest, I still prefer doing airbrush, contour and blush, but this is just a technique that I was showing to my students in my professional makeup course, and that's why you are seeing this video. अब करते हैं manual contour, blush and highlight. Of course, your strokes have to be very soft so that you do not shift, budge or move anything. I actually wanted to keep this look really soft and pretty and totally free of black and really dark brown. So I'm totally going to skip the kajal. I'm just adding a little hint of pink on the lower lash line as well to add a little bit of depth. And of course, to finish the look, I'm just going to do a very pretty pink lipstick and top it with gloss. क्या आप एक एयरब्रश आर्टिस्ट हैं? क्या आप मैनुअल और एयरब्रश टेक्निक्स को मिक्स करते हैं? आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. और एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई गाइस, आई एम यूजिंग द नारी स्टूडियो ब्रशेस एंड लैशेस हियर विच इज़ माई ओन ब्रांड एंड वी आर लॉन्चिंग very soon. Follow us on Instagram. Thank you for your support.